वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ 2 दिन के दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक, वजीर तिजारत जानी वजीर आजम के साथ हैं। शहबाज शरीफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करेंगे। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में पाकिस्तान समेत दुनिया भर से मुमालिक शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस में मसनूई जहानत, रोबोटिक्स, तालीम, खला और सेहत आमा से मुतालिक बात होगी। वजीर आजम सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। इक्तिसादी और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर बात की जाएगी। इक्तिसादी, तवानाई और दिफाई शोबों में 2 तरफा ताउन के इम्कानात का जायजा लिया जाएगा। दौरे में वजीर आजम शहबाज शरीफ की अहम मुलाकातें भी मुतवक्के हैं, जिनमें 2 तरफा ताउन, मईशत और दिफाई शोबों में ताउन के फरोग पर भी बात होगी। और खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल कौमी असम्बली में जुम्मे को पेश किया जाएगा। बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए इस मुतालिक अजहर। आज सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़ दी गई है और ज़राए का ये कहना है कि जुम्मा के रोज़ ये बिल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। और इस बिल के हवाले से हुकूमत जो है अपने इत्तेहादियों के साथ मुशावरत जो है वो कर रही है। ज़राए का ये कहना है कि तमाम अरकान कौमी असम्बली की जो हिदायत की गई है कि वो जुम्मा के दिन अपनी हाजिरी को ऐवान के अंदर यकीनी बनाए ताकि इस बिल को मंजूर कराया जा सके। ज़राए का ये भी कहना है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम पर भी मुशावरत हो रही है और इस बात का इम्कान है कि वो बिल भी जल्दी कौमी असम्बली में पेश कर दिया जाएगा। शुक्रिया अजहर। कार सरकार में मुदाखलत का केस। ATC इस्लामाबाद ने ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे, बताइएगा। जी देखिए, इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में ईमान मज़ारी एडवोकेट और उनके शौहर हादी अली चट्टा को आज पेश किया गया था। पुलिस की जानिब से कार सरकार में मुदाखलत का ये केस था। जो इंटरनेशनल टीम यहाँ पाकिस्तान आई हुई थी, उस दौरान जब रूट लगा था तो उन्होंने बैरियर हटाते हुए पुलिस एहलकारों के साथ कलामी भी उनकी हुई थी, जिस पर पुलिस ने दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज किया था। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज अबू अल असनाद जुल्करनैन ने समाअत करते हुए दोनों को 3 रोज के लिए जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है और 3 रोज बाद जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को दोबारा अदालत में पेश करने की हिदायत की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। पेशावर हाई कोर्ट ने बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। दर्ज मुकदमात में 14 दिन तक गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने नैब, FIA, विफाक और सूबाई हुकूमत से मुकदमात की तफसील तलब कर ली। अटॉर्नी जनरल ऑफिस को 14 दिन में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया। समाअत जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस साहबजादा असदुल्ला पर मुश्तमिल बेंच ने की। जस्टिस असदुल्ला ने इस्तफसार किया, खैबर पख्तूनख्वा में केस नहीं है तो पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध कैसे हिफाजती जमानत दे सकते हैं। वकील काजी अनवर एडवोकेट ने कहा, पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से पहले भी अदालती जमानतें दी गई हैं। जस्टिस असदुल्ला ने कहा, यह नहीं कहना चाहिए कि हिफाजती जमानत नहीं दे रहे, सिर्फ मुआवनत चाहते हैं। जस्टिस शकील अहमद ने कहा, आर्टिकल 199 में दायरा इख्तियार का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। काजी साहब से हम सीखना चाहते हैं, इसलिए सवालात करते हैं। अदालत ने हुक्म दिया, अटॉर्नी जनरल ऑफिस मुकदमा तफसील से मुताल्लिक तफसीली रिपोर्ट जमा कराए। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने पुलिस वैन से फरार की कोशिश करने के इल्जाम में गिरफ्तार 86 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर कर ली। मुल्जिमान में 2 MPAs, 34 पुलिस एहलकार, 42 रेस्क्यू एहलकारों समेत 86 अफराद नामजद हैं। ATC के जज ताहिराबाद सप्रा ने जमानतों की दरख्वास्तों पर समाअत की। PTI में कोई धड़ा नहीं, बानी नवंबर में बाहर आ जाएंगे। डोनाल्ड लू के कहने पर PTI की हुकूमत को सुबुकदोश किया गया है तो ये बाइद नहीं डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद हालात स्विंग हो जाएं। प्रोग्राम बाखबर सवेरा में सरदार लतीफ खोसा से पूछा गया कि बानी के बाहर आने में अदालती, सियासी या बैरूनी अवामिल होंगे, तो लतीफ खोसा बोले, तीनों का कॉम्बिनेशन ले लें। तहरीके इंसाफ में धड़ा नहीं है। खान साहब नवंबर में इंशाल्लाह बाहर आ जाएंगे और ये कम्युनिकेशन गैप जो है ये खत्म हो जाएगा। कम्युनिकेट आपको कर दिया गया है कि बानी PTI बाहर आ जाएंगे नवंबर में? देखे, खान साहब ने ना डील करनी है और खान साहब ने ना मुल्क छोड़कर जाना है। आज जो है ये उसकी क्वाशमेंट लगी हुई है, हाई कोर्ट में लगी हुई है। मुझे काफी उम्मीद है कि ये जो तोशाखाना नंबर 3 है
ये बिल्कुल नहीं पजीराई इसकी कानूनी हो सकती है। बाकी सारों में केस खान साहब की हुई है और अमेरिका का इलेक्शन भी यकीनन जो है 5 नवंबर को इस पे इम्पैक्ट करेगा। डोनाल्ड डू के कहने पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को सबकदोश किया गया और इमरान खान साहब को निकाला गया एक साजिश के जरिए। तो ये भी कोई बईद नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद जो है आपकी सारी जो है स्विंग हो जाए। ये जो आप कह रहे हैं कि ये जो नवंबर में बाहर आने का बानी पीटीआई के, तो इसके अवामिल अदालती होंगे, सियासी होंगे या फिर बैरूनी होंगे? जी तीनों का कॉम्बिनेशन ले लें। हम 26वीं तरमीम को नहीं मान रहे, ये 27वीं की तरफ जा रहे हैं तो अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं, ये भले जाते रहें। उसका मतलब नहीं होता है कि हम उस कानून को मान रहे हैं। निजाम के अंदर जाके आप अपना मौक़िफ़ भी बयान करते हैं और आप किसी जगह पर स्पेस नहीं देते हैं। इसहाक डार इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करें। Establishment of the People's Republic of China marked a transformative moment in the world history, ushering in an era of progress and strength for a great nation. Under the leadership of Chairman Mao and his revolutionary comrades, the Chinese people waged an unparalleled struggle for freedom, dignity, and self-respect. Kindly spare some moment, some time, and reflect. We don't have much difference in our age of the two countries. And Honorable Senator Mushahid Saab mentioned, how and which countries China's tried to follow in the beginning, which included Pakistan model as well. There's a separate discussion sometime, what goes wrong in this country. I think we will certainly have another discussion, but with reference to today's event, I would say this monumental journey inspired by Chinese, countless nations across the world who actually wish to now follow China. Over the past 75 years, New China has created a remarkable course, reaching unprecedented milestones in every sphere of life and contributing to a better world. Again, one of the Honorable Speaker has explained the different phases. Mushahid Saab says he went first time 50 years ago when he was in FC College. Yes. So, those of you who have been to China in different phases, and particularly in the last few years, I think the speed of revolution and transformation, what I have witnessed in last couple of decades, is of the light speed. It's unbelievable. You simply cannot comprehend that such a speed can be possible in certain country. We have been witnessing all leg pulling from a certain part of the globe. His Excellency Ambassador said they're second biggest economy. Absolutely right. I have no doubt they're going to be the biggest economy in due course. Inshallah. All tools have been used against China. Those who observe very closely, starting from the tariff impositions from 25 to 100% on different items, semiconductors, electric vehicles. But mark my words, I have a very clear, the speed I have seen in Chinese development and progress testifies that it's not too long when China will become the super economic power. Absolutely. Ladies and gentlemen, through the visionary leadership of the Communist Party of China, the country has not only eradicated extreme poverty, as explained and given numbers by Honorable Ambassador here, but also elevated the quality of life for its citizens and pioneered advancements across various sectors. Now, at one time, Chinese labor was considered to be very economical. I don't use the word cheap. And that's why the many industries of the world actually located from the West in China. You will be surprised to know
that the per capita income and the living style has gone so high in the last decade. Pakistan labor has become cheaper than China now. Nepal labor has come cheaper than China. Bangladesh labor has come cheaper than China. That's why there was a huge discussion just 6-7 years ago of relocation of a lot of Chinese labor-intensive industries in these countries. Pakistan was one of the best candidates. I'll come to that in a minute. The sadful story of Pakistan. We take off and we just fell repeatedly. So that was the best time, 2016-17, when Jetro was saying that Pakistan is likely to be the second choicest place for foreign direct investment. When the international rating agencies were frequently upgrading your ratings. When the Morgan Stanley and the other countries were saying that forget about neighbor, look at Pakistan for investment. Anyway, it's never too late. So historically, I think we have still space, in my opinion. I'm very optimist. Some people say I'm born optimist, but my experience also says optimism, hope must prevail, because we have not seen once, but multiple times Pakistan rising, and then the political instabilities and the domestic conspiracies just take Pakistan to a negative direction. From space exploration to artificial intelligence, medical science, green development, global political and economic landscapes enhance the structure of global governance. It has strengthened the role of multilateral diplomacy, and there's so many positive things you can see and experience when you study the China's 75 years of growth. Importantly, China's proactive leadership in addressing climate change has galvanized international climate action. With its investments in renewable and green energy, as well as its pledge to achieve carbon neutrality by 2060, China sets a standard for sustainable development that resonates globally. Those of you who have traveled to China in the last few years, just about 7-8 years ago, when you would go to Beijing, there would be so much pollution you can see. In just 5 to 6 years, I've just been in the last 2 years. तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर का कहना है अमरीका पाकिस्तान में जमहूरियत को फलते फूलते देखना चाहता है। वाशिंगटन में न्यूज़ ब्रीफिंग में एक सवाल पर मिलर का कहना था कि बानी पीटीआई से मुतालिक अरकान कांग्रेस का खत सदर बाइडेन को मिल गया है। Democracy upheld in Pakistan, including everyone's fundamental right to participate in democracy and exercise their fundamental human freedom. Last week, more than 60 members of Congress sent a letter to President Biden urging him to secure some guarantees from Pakistani government for the safety of Imran Khan in prison. Do you have any position on that letter? Only that we've received it. We'll respond in due course to the members. Sir, after the day after this letter, the United States Deputy Assistant Secretary for Democracy and Human Rights, Monica Jacobson, met with the Federal Secretary of Pakistan on Human Rights, Alauddin Khwaja, in Islamabad to discuss human rights. And I don't know, it's a coincidence or what. Next day after that meeting, Imran Khan's sisters and his wife were released from the prison. And Imran Khan's supporters claim that it is because of Biden administration. Did this administration play any role in the release of political prisoners in Pakistan? So all I will say about that is that the Deputy Assistant Secretary in that meeting emphasized the important role human rights, support for a vibrant civil society, and strong democratic institutions play in our comprehensive U.S.-Pakistan relationship. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात का मैदान सज गया। सदारती नशिस्त पर आसमा जहांगीर ग्रुप के अब्दुल रऊफ अतार और हामिद खान ग्रुप के मुनीर अहमद काकड़ मद्दे मुकाबल हैं।
जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर सलमान मंजूर और जाहिर असलम आवान आमने सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट बार की मरकजी काबीना के अलावा चारों सूबों से नायब सदूर और एग्जीक्यूटिव मेंबर का इंतखाब किया जाएगा। नायब सदर सिंध की नशिस्त पर 3 उम्मीदवार खुशहाल खान अवान, नदीम कुरैशी और यूसुफ मौलवी मैदान में हैं। एडिशनल सेक्रेटरी के लिए औरंगजेब खान और जुबैर हुसैन मद्दे मुकाबिल हैं। एग्जीक्यूटिव मेंबर सिंध की नशिस्त के लिए 4 उम्मीदवार आमिर जमील विर्क, अहमद अली देवान, नवीदुल हक और रिजवाना जमील में मुकाबला है। 4000 से जायद वकला अपने नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। कराची से 516, लाहौर से 1400 से जायद, जबकि पेशावर से 372 वकला वोट डालेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार इंतखाबात में सबसे बड़ा मसला आइन को इसके असल मकाम पर वापस लाना है। वकला रहनुमा हामिद खान कहते हैं, हमारे नज़दीक 26वीं तरमीम आइन पर बहुत बड़ा हमला और डाका है। इलेक्शन सारे पाकिस्तान में हो रहा है, इसमें हमारा सबसे बड़ा इशू कि आइन को फिर वापस हम वहाँ लेके आए जो कि असली आइन था। क्या वकला 26वीं तरमीम को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, क्योंकि हमारे नज़दीक ये 26वीं तरमीम आइन पर बहुत बड़ा हमला और डाका है। 26वीं तरमीम ने हमारे अदालती निज़ाम को तहत करके रख दिया है। वकला के प्रोफेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ एक मुहिम भी चलाएँ और पूरी तरह से कोशिश करें इस 26वीं तरमीम को ख़त्म करने की, ताकि एक दफ़ा फिर अदलिया आज़ाद हो। रात गए पंजगुर के इलाके परूम में मुसल्ला अफराद के हमले में 5 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। जिला इंतजामिया का कहना है जाँ बहक और जख्मी अफराद तामीराती कंपनी के कैंप में सिक्योरिटी पर मामूर थे। मुसल्ला अफराद ने कंपनी की मशीनरी को भी आग लगा दी। शुमाली गजा में इसराइली मजालिम पर बैनुल-अक़वामी बरादरी खामोश तमाशाई बनी हुई है। 25 दिन से जारी मुहासरे में 1000 अफराद शहीद हो चुके हैं। बैतुल्लाहिया में स्कूल पर ताज़ा हमले में 7 अफराद शहीद हुए। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी अनरवा पर पाबंदी लगा दी। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान अली आगा की मुलाकात। ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे सीरीज के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। चेयरमैन का कहना है ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे सीरीज में कौम को अच्छी कारकर्दगी की तवक्को है। उम्मीद है टीम ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। टीम अगर टीम बनकर परफॉर्म करेगी तो कोई आपको हरा नहीं सकता। कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान अली आगा ने भरपूर एतमाद करने पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। बालाई इलाकों में सर्दी ने दस्तक दे दी है। सवात के हसीन सियाहती कालाम में बर्फबारी का आगाज हो गया है। वादी की खूबसूरती बढ़ गई है। मानसहरा के मैदानी इलाकों में बारिश, जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। बाबूसर टॉप पर 1 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। शदीद बर्फबारी ने ट्रैफिक की रवानी को भी मुतासर किया। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बादल बरसने की पेशगोई की है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत खित्ता पोटोहार में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।